Dear students, today we are solving the MSTAT 2024 question number 8. So this is the number where you can ask for any doubts, questions and queries or class related inquiries. So suppose that we have paired observations x1, x2, x1, xn. Statistician thinks that in the following parametric model may be appropriate for the data. We want to add integers alpha and beta with respect to xi to the power alpha, xi to the power beta bivariate parameters. हमें likelihood function of the model निकालना है, ठीक है? तो कैसे होगा? So given that a parametric model IT, so the bivariate normal distribution mu x equal to mu y equal to 0, this equal to sigma y square, and the correlation, this will be the following probability distribution में f of x y. We can write it in this way: 1 by 2 pi root over 1 minus rho square exponential of 1 2 rho square rho xy. Okay, so in our model we consider the transformation variables. So in this case in our model we consider the transform variable क्या लेंगे? uy को लेंगे xi to the power alpha और vi ले लीजिए y to the power बीटा वाला, ठीक है? तो यहाँ पर डायरेक्टली x1 x2 xn की जगह पर ये हो जाएगा u1 v1 ऐसे करके लिखेंगे, ठीक है? तो जॉइंट लाइक्लीहुड फंक्शन जो n पेयर के ऊपर से होता है, तो ये हम लोग डायरेक्ट नॉर्मल डेंसिटी से ही कर सकते हैं एंड ट्रांसफॉर्म वेरिएबल ui vi. तो यहाँ पर में जो लाइक्लीहुड फंक्शन अपना होगा l इक्वल टू फंक्शन क्या रहेगा? अल्फा बीटा रो और ये xi yi i माइनस 1 to n, ठीक है? ये अगर पाई आई के हिसाब से हो गया तो 1 बाई 2 पाई रो स्क्वायर, ई टू दी पावर कैसे लिख रहा हूँ 1 2 1 माइनस रो स्क्वायर हो गया. ये यू स्क्वायर यू आई स्क्वायर वी आई स्क्वायर माइनस 2 यू आई वी आई रो, काम ख़त्म, ठीक है? तो सिंप्लीफाई कर देते हैं थोड़ा बहुत. सो दिस इज 2 पाई रूट ओवर दिस n exponential same as above, ठीक है? सब्सटीट्यूटिंग ui और xi अगर इसमें डायरेक्ट सबको सब्सटीट्यूट करना है एंड दैट विल बी योर लाइक्लीहुड फंक्शन डन. तो इसमें लिखने से फाइनली आएगा 2 पाई रूट ओवर 1 माइनस रो स्क्वायर ऑल टू द पावर n एक्सपोनेंशियल ऑफ 1 बाई and that's the end of this question.